Hello. Good evening, everyone, and welcome to this webinar on refund under GST and trade finance provided by Drip Capital. My name is Vanita D'Souza. I am Communications Manager at Drip Capital and your host. We have with us today CA Rajesh Kumar Khandelwal and Mr. Sarthak Agarwal, Regional Sales Lead at Drip Capital. Thank you for taking the time out of your busy day and for agreeing to share your thoughts with our audience. A note to the audience, during the webinar, you can submit your questions in the Q&A section on Zoom. For people who are watching us on YouTube, you can post your questions in the live chat section. All the questions will be answered at the end of this webinar. Without any delay, let's begin. In July 2017, when the GST was introduced to the country, little did we know that the simplified tax structure would have complicated refund process. To clear our doubts around these processes, today we have CA Rajesh Kumar Khandelwal with us. CA Rajesh Kumar Khandelwal is a fellow member of the Institute of Chartered Accountant of India. He's a qualified MBA, LLB, and a company secretary. He's empaneled as the faculty for GST training in India by ICAI. He was nominated as the chairman of GST committee of the Engineering Export Promotion Council. CA Khandelwal has rich experience around topics such as GST, VAT, service tax, income tax, auditing, and corporate finance. He has delivered various lectures on similar subjects. He was also invited as a guest faculty to train the entire team of CGST and SGST officers. CA Khandelwal was a regular speaker at FM 107.8, also known as the Radio Manav Rachna, during the business hour and finance mantra segment. I now invite CA Khandelwal to share his thoughts on the intricacies of GST compliance, causes, and possible solutions for refund under GST. Over to you, sir. हेलो आ गई आवाज ओके 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 Thank you very much, ma'am, for inviting me. I am also grateful to the Drip Capital who gives me this opportunity to share my little knowledge on this topic, refund under GST. और किसी भी गवर्नमेंट के लिए, टैक्स पेयर के लिए रिफंड बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है,
टॉपिक है, बिकॉज एवरी टाइम एक्सपोर्टर नीड्स रिफंड बट गवर्नमेंट डोंट वांट टू गिव एनी रिफंड टू देम, क्योंकि कोविड चल रहा है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, बट एक्सपोर्टर वांट्स वर्किंग कैपिटल। उनको इस वक्त फंड की रिक्वायरमेंट है, वेदर इट विल बी गिव बाय द ड्रिप कैपिटल और इट विल बी गिव बाय द गवर्नमेंट। तो उनको पैसा चाहिए समहाउ, चाहे वो रिफंड से मिले और चाहे वो बैंक फाइनेंस से मिले। बैंक एक लिमिट तक ही फाइनेंस प्रोवाइड करता है, बट ये रिफंड तो उनका अपना पैसा है। अब इसको मिलने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जब से कोविड आया है गवर्नमेंट ने वैसे ही रिफंड नहीं दिए हैं और प्रेजेंट में भी गवर्नमेंट ने रिफंड देने कम कर रखे हैं। कोविड आने के बाद में गवर्नमेंट ने रिफंड से रिलेटेड प्रोविजंस में कुछ अमेंडमेंट किए हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, एंड आई नो इट वेरी वेल कि ये जो अमेंडमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सपोर्टर्स क्योंकि अपने बिजनेस को रीअरेंज करने में लगे हुए हैं, तो उनका इन अमेंडमेंट की तरफ ध्यान ही नहीं गया है कि ये कौन कौन से अमेंडमेंट है जो उनके रिफंड को इंपैक्ट कर सकते हैं, उनका रिफंड अमाउंट कम हो सकता है। सो आई विल डिस्कस in this program nitty-gritties regarding refunds, what are the provision which are amended by the government during the COVID period, and what important things which need to be considered as it by exporter to file a refund claim under GST। अगर वो LUT का ऑप्शन लेके एक्सपोर्ट करते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं, बिना LUT के ऑप्शन के मींस बाय पेमेंट ऑफ IGST अगर वो एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है और क्या फ्यूचर में हो सकती है, उस पे मैं डिटेल्ड में डिस्कस करूंगा। उससे पहले ब्रीफ प्रोविजन देख लेते हैं जो GST के प्रोविजंस हैं। GST में जो रिफंड से रिलेटेड प्रोविजंस है वो क्या कहते हैं, सिर्फ 2 मिनट लूंगा उस पे। उसके बाद मैंने कुछ फाइन पॉइंट्स बनाए हैं, 5 to 6 फाइन पॉइंट्स है मेरे, जिन्हें मैं डिस्कस करूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है जितने भी यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से किसी को भी मैं बता रहा हूं इन पॉइंट्स के बारे में या तो पता नहीं होगा, अगर पता होगा तो बहुत ही कम पता होगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले प्रोविजन से स्टार्ट कर देता हूं। GST के अंदर रिफंड आपको केवल 2 ही केसेस में मिलता है। फर्स्ट, इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, सेकंड in case of inverted duty structure. If it is zero rated supply means export of goods, services or both. In case of export of goods, services or both, it may be two-way. Against LUT means against without payment of tax, and second way is with the payment of IGST. In this case you can claim your IGST as a refund if you are availing export against LUT, then you can claim refund your input or input services ITC. If you are under the provision of inverted duty structure, then you can also avail the refund under the provision of inverted duty structure. ये inverted duty structure क्या है इसको भी मैं बताता हूं आपको। If your input tax rate is higher than the output tax rate, it means your output supply GST rate is higher than input supply GST rate, then you can claim refund under inverted duty structure। गवर्नमेंट ने रिसेंटली कोविड आने के बाद में कुछ नए नोटिफिकेशन इशू किए हैं जिनमें आपको ध्यान रखना है अगर आप रिफंड अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई और इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, देन व्हाट पॉइंट यू विल कंसीडर कि आपका जो रिफंड है वो कहीं पे भी ना रुके और स्मूथली आपका रिफंड आ जाए। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसमें बात करूंगा आपकी रिफंड ऑफ इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स। इफ यू आर एक्सपोर्टर, यू आर डूइंग एक्सपोर्ट विद LUT और विद पेमेंट ऑफ IGST, दोनों केसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट वन, if you are doing export through LUT means you are not paying any IGST, then you can claim refund of ITC of input and input service, but you can't avail a refund of ITC
विच यू हैव पेड ऑन कैपिटल गुड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आप दो तरह से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपने आईजीएसटी पे किया और उसका रिफंड लिया। आपने आईजीएसटी पे नहीं किया, एलयूटी का ऑप्शन अवेल किया और आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं। जब आप रिफंड क्लेम करते हैं, एलयूटी का ऑप्शन अवेल करके आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप रिफंड क्लेम करते हैं, तो आपके पास में रिफंड के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कौन सी? आपको इनपुट पे जो आपने आईटीसी दिया है उसका रिफंड मिल सकता है। आपने सर्विसेज पर जो आईटीसी दिया है उसका रिफंड मिल सकता है। आपने जो कैपिटल गुड्स, प्लांट एंड मशीनरी या कोई और कैपिटल गुड्स है उस पर जो आपने आईटीसी जो जीएसटी पे किया है उस पर आपको रिफंड मिल सकता है। परंतु अगर आपने एलयूटी का ऑप्शन अवेल किया और आपने एक्सपोर्ट किया, मींस आपने आईजीएसटी पे नहीं किया, तो आपको इन तीनों में से केवल दो ही आइटम का रिफंड मिलेगा। एक आपको मिलेगा जो आपने इनपुट्स परचेज किए हैं उन पर जो जीएसटी पे किया है उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, और एक आपने जो सर्विसेज ली है, आप ऑडिट कराते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस लेते हैं, आप एक्सपोर्ट करते हैं। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की आपने सर्विस दी है उसने 1 लाख रुपए का आपको इनवाइस दिया है, 18,000 रुपए का उसने जीएसटी लगाया है और आप एक्सपोर्ट करते हैं, और एक्सपोर्ट आप बिना टैक्स दिए करते हैं, तो आपको इसका रिफंड मिल जाएगा। अब आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, आपने कैपिटल गुड्स परचेज किया, आपने मशीनरी परचेज की, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की, आपने उस पर 18 लाख, मैंने एज्यूम कर लिया रेट ऑफ टैक्स से 18%, आपने 18% जीएसटी पे किया है, तो आपको जो ये कैपिटल गुड्स पे आपने जीएसटी पे किया है ना, इसका आपको रिफंड अलाउड नहीं होगा अगर आप एलयूटी का ऑप्शन अवेल करके एक्सपोर्ट करते हैं। मींस आप टैक्स पे नहीं करते, आप एलयूटी को अवेल करते हैं, तो आपको कैपिटल गुड्स पे जो आपने जीएसटी पे किया है उसका आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो यहां पर ये आपको एक लॉस है, प्योरली लॉस है। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए टैक्स दे के एक्सपोर्ट करते, मींस आप आईजीएसटी पे करते और उसके बाद आप रिफंड क्लेम करते, तो आपको इनपुट पे जो आपने टैक्स दिया, सर्विसेज पे आपने जो टैक्स दिया, और जो कैपिटल गुड्स, मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया, आपने 1 करोड़ रुपए की मशीन परचेज की, आप उससे गुड्स बनाते हैं, वो आप एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपको वो 18 लाख का जो जीएसटी आपने पे किया है उसका भी आपको रिफंड क्लेम हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आपको दो चीजें बता दी कि आपको एलयूटी का ऑप्शन अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपको आईजीएसटी पेमेंट के थ्रू एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर हमने तो एलयूटी ले रखा है, क्या हम एलयूटी और आईजीएसटी पे करके दोनों तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, क्या सर ऐसा पॉसिबल है कि हमने क्या किया, एक ही महीने में 3 इनवाइस रेज किए, 4 किए, 5 किए, क्या हम किसी इनवाइस में एलयूटी का ऑप्शन अवेल कर सकते हैं, मींस टैक्स दिए बिना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और क्या किसी में हम टैक्स दे के एक्सपोर्ट कर सकते हैं? यहां पर मैं आपको आंसर कर देता हूं दोनों क्वेश्चंस का। अगर आपने एलयूटी ले रखा है और आप टैक्स देकर आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो बार फ्रॉम द एक्ट, आप बिल्कुल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास एलयूटी है, उसके बाद भी आप आईजीएसटी पे करिए और आईजीएसटी पे करके रिफंड ले लीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। दूसरा क्वेश्चन, आपने एक महीने में 2 ही आपकी शिपमेंट जाती हैं, आप क्या, अब आपका क्वेश्चन ये है, सर क्या हम एलयूटी का ऑप्शन एक शिपमेंट के लिए अवेल कर लें और दूसरी शिपमेंट के लिए अवेल ना करें? बिल्कुल पॉसिबल है। आप एक शिपमेंट एलयूटी के अगेंस्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मींस आप टैक्स ना पे करें और एक्सपोर्ट कर दें, और जो दूसरी शिपमेंट जा रही है वहां पर आप टैक्स पे करें और एक्सपोर्ट कर दें। जो आपने टैक्स पे कर दिया उसका आपको रिफंड आ जाएगा। अब और थोड़ा सा अगर मैं डीप में जाऊं तो मैं यहां पर आपको एडवाइस करूंगा, जब तक आपके पास में टैक्स पड़ा हुआ है, टैक्स मींस आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में आपका आईटीसी है, आपकी इनवर्ड सप्लाई ज्यादा है, आपकी परचेज ज्यादा है, आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है,
और आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा पहले आप ऑप्शन अवेल करें आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट करने का। पहले आप ऑप्शन अवेल करें आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट करें, और उसके बाद जब आपके पास में आईटीसी खत्म हो जाए, जब आपके पास में क्रेडिट लेजर में आईटीसी ना बचे, तो आप एलयूटी का ऑप्शन अवेल कर लें। तो उस केस में क्या होगा, जो आपका आईटीसी पहले आपके पास में पड़ा हुआ है, आईटीसी लेजर में पड़ा हुआ है, क्रेडिट लेजर में, और आपने जो इनवर्ट सप्लाई लिया वो क्या किया, आपने आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट किया। अब जो आपने आईजीएसटी दिया ना, वो तो जैसे ही आप जीएसटीआर 1 और 3 भी फाइल करेंगे, विद इन 3 डेज और 7 डेज आपके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप एलयूटी का ऑप्शन अवेल करके एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और आप टैक्स देके एक्सपोर्ट करेंगे, तो पहले आपको टैक्स अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। मींस बैंक अकाउंट के थ्रू आपको पहले पे करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपका क्रेडिट आएगा। कहां पे आएगा, आपका बैंक अकाउंट में दोबारा से पैसा वापस आ जाएगा। अब जो सेकंड ऑप्शन मैंने बताया, आप देखिए, एक तो आपके पास में फंड पहले से ही नहीं है, ड्रिप कैपिटल वाले फिर भी आपको कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप एक्सपोर्ट करिए, इनवॉइस इनको दीजिए और ये आपको उसको डिस्काउंट कर देंगे। मैं तो आपको उससे भी बढ़िया ऑप्शन बता रहा हूं, आप पहले टैक्स देके एक्सपोर्ट करें, जब आपका आईटीसी खत्म हो जाए आप एलयूटी का ऑप्शन अवेल करें और एलयूटी के अगेंस्ट में आप एक्सपोर्ट कर दें। तो ये मैंने आपको पहला पॉइंट ब्रीफ कर दिया। नेक्स्ट, अमेंडमेंट इन रूल 89 सब रूल 4 क्लॉज सी। एक बार इसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये जो हमारा नया रूल अमेंडमेंट आया है इसके अंदर, ये रूल क्या कहता है, आपको ध्यान होगा सीजीएसटी एक्ट और आईजीएसटी एक्ट दोनों हमारे इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। इसके अंदर आईजीएसटी एक्ट में डेफिनेशन दी हुई है दो, एक दी हुई है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और दूसरी है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। जब जीएसटी एक्ट बना था तो वहां पर एक्सपोर्ट के बारे में बताया गया था, एक्सपोर्ट मींस एनी गुड्स जो आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, कैरिंग आउट एनी गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। इसका मीनिंग यह है, आपने कोई भी गुड्स इंडिया के बाहर भेज दी, चली गई, तो वो आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये केवल एक ही कंडीशन थी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में। अब ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, गवर्नमेंट ने अब एक कंडीशन और डाल दी है। वो कंडीशन क्या डाल दी है जी, पहले कंडीशन सिर्फ ये थी कि आपने गुड्स को आउट ऑफ इंडिया भेज दिया, आपका अमाउंट फॉरेन करेंसी में आए या ना आए वो एक्सपोर्ट होता था। परंतु गवर्नमेंट ने रिसेंटली अमेंडमेंट कर दिया और ये बता दिया कि अगर आपने गुड्स का एक्सपोर्ट किया और फेमा एक्ट में आरबीआई के अंदर, फेमा के अंदर जो फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस का टाइम पीरियड दिया हुआ है, अगर आपका वो रेमिटेंस उस टाइम पीरियड में नहीं आता है, तो जो आपका एक्सपोर्ट हुआ है वो आपका एक्सपोर्ट नहीं माना जाएगा। गुड्स के केस में जनरली 9 महीने का टाइम दिया गया है, आपका एक्सपोर्ट रियलाइजेशन हो जाना चाहिए फॉरेन करेंसी में। और सर्विसेज के केस में तो पहले से ही कंडीशन थी, अगर आप सर्विस का एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां पर पहले से 5 कंडीशन है, उनमें से एक कंडीशन थी कि आपका रियलाइजेशन फॉरेन करेंसी में होना चाहिए। तो वहां तो कोई इशू ही नहीं है, हमें पता है, परंतु गुड्स के लिए नहीं डाल दी। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर मान लीजिए गुड्स आउट ऑफ इंडिया चली गई, टैक्स देके आपने एक्सपोर्ट किया, आपने आईजीएसटी पे किया, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी आपने फाइल की, तो आपको तो इमीडिएट रिफंड आ जाएगा, जैसे 3 या 7 डेज में मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, जब आप टैक्स देते हैं तो जीएसटीआर 1 को ही रिफंड की एप्लीकेशन माना हुआ है। तो आपने क्या किया साहब, जीएसटीआर 1 फाइल की, 7 डेज में आपका रिफंड आ गया, आप बड़े खुश। लेकिन आप ध्यान रखना, आपको अगर उसका एक्सपोर्ट रियलाइजेशन नहीं हुआ विद इन द टाइम फ्रेम, तो आपको जितना रिफंड मिला है ना वो वापस करना पड़ेगा। ये नया अमेंडमेंट है। अगर मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट किया 1 करोड़ रुपए का, उसका रियलाइजेशन हुआ सिर्फ 80 लाख का, उसका रियलाइजेशन हुआ सिर्फ 80 लाख का, 20 लाख तो आपके पास में आए ही नहीं। जब 20 लाख आपके पास में नहीं आए ना, तो उस 20 लाख पर आपको जो जीएसटी रिफंड ऑलरेडी मिल चुका है वो आपको वापस करना पड़ेगा। तो यहां पर जितने भी व्यूअर्स
पार्टिसिपेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं वो इस चीज को ध्यान दें कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में भी एक्सपोर्ट रियलाइजेशन इन फॉरेन करेंसी की कंडीशन आ चुकी है और इस पर ध्यान देना जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि भाई एक तो क्या हुआ, आपका पैसा नहीं आया, नंबर वन, लेट आया, और दूसरा जो रिफंड आपको मिलना चाहिए, जो आपने एक्सपोर्ट पे जीएसटी पे किया था, वो आपका फंस गया। आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इस वक्त, जो आपको वर्किंग कैपिटल यहां पर नहीं मिल पाएगी। इसके साथ साथ एक और अमेंडमेंट है इसी के अंदर। ये तो अमेंडमेंट वो था कि जो हमने आपको बताया फॉरेन करेंसी नहीं आई, अब एक अमेंडमेंट और है। वो अमेंडमेंट क्या है जी? वो अमेंडमेंट ये है, अगर मान लीजिए आपने कोई इनवॉइस जनरेट कर दिया एक्सपोर्ट का, कई कंपनियां क्या करती हैं, टारगेट पूरे करने के लिए इनवॉइस जनरेट कर देती हैं और एक्सपोर्ट पूरे सालों साल चलता रहता है। अब उन्होंने क्या किया, एक एक्सपोर्ट इनवॉइस जनरेट कर दिया और उस के अगेंस्ट में एक्सपोर्ट मान लीजिए 3 महीने के अंदर उनको करना था, नहीं सॉरी, एक्सपोर्ट इनवॉइस उन्होंने जनरेट किया और 3 महीने के अंदर एक्सपोर्ट नहीं किया, तो गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना दिया है 3 महीने खत्म होने के बाद जैसे ही 15 दिन लैप्स होंगे तो आपको उस इनवॉइस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, सुनना इस बात को, कि आपने एक्सपोर्ट नहीं किया, आपने एक्सपोर्ट इनवॉइस रेज कर दिया और 3 महीने निकल गए, आप भूल गए उसको कैंसिल करना, या आपका वो एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं, बुक्स में रह गया, तो यहां पर आपको गवर्नमेंट ने बोला है आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, जबकि आपकी तरफ से कोई भी एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। इसी तरह से मैं इसको लिंक कर देता हूं, अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में आते हैं और आपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का इनवॉइस रेज कर दिया है, तो वहां पर प्योरली कंडीशन दे रखी है कि अगर आपका विद इन ए 1 ईयर आपका एक्सपोर्ट का रियलाइजेशन नहीं होता है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। ये अभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि अभी आया है, जब आप नेक्स्ट ईयर में जाएंगे ना तब ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप रिफंड वापस करेंगे ना तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स। अब एक नया नोटिफिकेशन आया है जीएसटी में रिफंड से रिलेटेड, बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हैं। ये जो नया नोटिफिकेशन आया है, ये नोटिफिकेशन नंबर है आपका नोटिफिकेशन नंबर 135। जितने भी पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उन्हें एडवाइस करूंगा ये नोटिफिकेशन नोट कर लें। नोटिफिकेशन नंबर 135 रिफंड से रिलेटेड है और जून 2020 में आई थिंक ये आया था। उससे पहले ये नोटिफिकेशन आपका था रिफंड में 125/44/2019। ये नोटिफिकेशन आया था 18 नवंबर 2019 को। नोटिफिकेशन नंबर 125 ओल्ड नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन नंबर 135 न्यू नोटिफिकेशन है। जो भी यहां पर पार्टिसिपेंट्स एक्सपोर्ट में डील करते हैं, जिनका रिफंड बनता है, अपनी रिफंड एप्लीकेशन लगाने से पहले इस नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर पढ़ लें। रीजन, मैं अभी आपको लाइव केस बताता हूं। मेरे एक क्लाइंट ने 9,10,000 का रिफंड अप्लाई किया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में। ध्यान देना, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में। और वो एक्सपोर्ट ऑफ जो सर्विस का केस है ना, उन्होंने पहले टैक्स पे किया। टैक्स कितना पे किया? 9,10,000 रुपए का। अब जो उन्होंने टैक्स पे किया ना 9,10,000 रुपए का, वो उन्होंने 3 बार रिफंड अप्लाई किया, तीनों बार उनका रिफंड रिजेक्ट हो गया। अब क्यों रिजेक्ट हो गया जी? इसलिए रिजेक्ट हो गया, वहां पर उन्होंने एक डेफिशिएंसी मेमो इशू किया। जब हम डेफिशिएंसी मेमो को देखते हैं तो वहां पर कहता है जी डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट। अब हमने देखा भाई डॉक्यूमेंट तो हमने सारे कंप्लीट लगा रखे हैं। जीएसटी ऑफिसर से मिलने गए, उन्होंने कहा जी सारी चीजें हमने भेज रखी है, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, आप जाइए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कौन से डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है। उसके बाद उन्होंने लास्ट में हमें बताया सर एक बार सर्कुलर नंबर 135 पढ़िए, आपको पता लग जाएगा। जब हमने सर्कुलर नंबर 135 पढ़ा तो हमें यह पता लगा कि अगर आप रिफंड अप्लाई करते हैं 2 केसेस में, या तो आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में कर रहे हैं, या आपने क्या किया, आपने एक्सपोर्ट किया और एलयूटी का ऑप्शन आपने अवेल किया, तो आप क्या करेंगे? नेचुरल बात है, आपने टैक्स तो पे किया नहीं। जो आपका इनवर्ड सप्लाई है गुड्स का और सर्विसेज का, उसी का तो रिफंड लेंगे। तो लॉ ने क्या बता दिया,
अब आपको GSTR 2A भी अटैच करनी है। अब आपको GSTR 2A भी अटैच करनी है। अब आपको एक और अनेक्चर है, अनेक्चर बी। अनेक्चर बी भी आपको अटैच करना है। अब ये अनेक्चर बी क्या है साहब? अनेक्चर बी के अंदर आपके सारे के सारे इनवॉइसेस आते हैं इनवर्ड सप्लाई के। कौन कौन से? इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस। ये आपको अनेक्चर बी में डिटेल बनानी है। अब इन्होंने इसके साथ और क्या दे दिया? अब आपको क्या करना है? अब आपको HSN कोड भी डालना है। अब आपको HSN कोड भी डालना है। अब भाई HSN कोड की रिक्वायरमेंट क्यों आ गई? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपने LUT का ऑप्शन अवेल किया और LUT का ऑप्शन अवेल करके एक्सपोर्ट किया तो आपको कैपिटल गुड्स पर आपने जो IGST, कैपिटल गुड्स पे आपने जो GST दिया है, आपको उसका रिफंड नहीं मिलेगा। तो पहले ये पता ही नहीं चल पाता था कि आपने जो GST पे किया है वो इनपुट पे किया है या इनपुट सर्विस पे किया है या कैपिटल गुड्स पे किया है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट भी धीरे धीरे समझदार होती जा रही है। उसने देखा कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो तो सारा का सारा ITC क्लेम कर ले रहे हैं रिफंड के रूप में। तो उन्होंने क्या किया? एक अनेक्चर तैयार किया, उसमें डिटेल लेने लग गए इनवर्ड सप्लाई की और उसमें HSN कोड भी डाल दिया। अब जैसे ही आप HSN कोड डालोगे तो सामने वाले ऑफिसर को पता लग जाएगा भाई ये इनपुट गुड्स है, इनपुट सर्विस है या आपकी कैपिटल गुड्स है। तो ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है। अब मैंने ये क्यों बताया आपको? देखिए, मैंने आपको बताया, मैंने 3 बार अप्लाई किया, तीनों बार रिजेक्ट हो गया और 4th टाइम में जाके वो पास हुआ। इन सारे कामों में 4 महीने लग गए जी। अब मेरी 4 महीने के लिए वर्किंग कैपिटल फंसी रह गई, नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए आप लास्ट में अप्लाई करते हैं, 2 साल का टाइम पीरियड निकल जाता है तो आपका तो वो रिफंड क्लेम ही रिजेक्ट हो जाएगा, आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नोटिफिकेशन नंबर 135 को पढ़ना जरूर है और उसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट आपने वहां पर लगाने हैं। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स नॉट रियलाइज्ड रिकवरी ऑफ रिफंड। ऑलरेडी मैं पॉइंट नंबर 1 में डिटेल्ड में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट रियलाइजेशन विद इन द टाइम फ्रेम बाय RBI नहीं होता तो जो आपको रिफंड मिला है वो रिफंड आपको गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। आप नहीं करते हैं तो आपको इंटरेस्ट भी लगेगा और पेनल्टी भी लगेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रेस्ट्रिक्टिंग रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ इनवॉइस रिफ्लेक्टिंग इन GSTR 2A। यहां पर मैं 2 मिनट लूंगा। देखिए, एक जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो GSTR 1 फाइल करता है और GSTR 3 भी फाइल करता है। अब जो GSTR 1 है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने किसी एक्सपोर्टर का ऑडिट किया, मैंने उसको 1 लाख रुपए का इनवॉइस जनरेट किया, मैंने 1 लाख रुपए के इनवॉइस के लिए अपनी GSTR 1 फाइल की। जब मैं GSTR 1 फाइल करूंगा तो वो एक्सपोर्टर को एक स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट होगी। वो जो एक्सपोर्टर को स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट होती है उसको बोलते हैं GSTR 2A, उसको हम बोलते हैं GSTR 2A। अब गवर्नमेंट ने क्या बता दिया साहब? अभी जो नोटिफिकेशन नंबर मैंने आपको 125, सॉरी नोटिफिकेशन नहीं है, ये सर्कुलर है। मैंने हो सकता है मैंने आपको जो पहले बताया वो 135 नोटिफिकेशन बता दिया हो, ये सर्कुलर है सर, सर्कुलर 125 और सर्कुलर 135। सर्कुलर के अंदर पहले कंडीशन नहीं थी कि 2A से मैचिंग की, परंतु इन्होंने जो नया सर्कुलर इशू किया, सर्कुलर नंबर 135, उसके अंदर इन्होंने कंडीशन डाल दी। क्या कंडीशन डाल दी? कि सब आपको हम केवल उसी अमाउंट का रिफंड देंगे जो आपके GSTR 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई? ये चीज तो मैंने आपको ऊपर वाले में भी बता दी। किसमें बता दी? जो मैंने आपको बताया कि रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट, वहां पे भी तो मैंने बताया आपको कि 3B भी लगाना है आपको और 2A भी लगाना है आपको। अब यहां पर ये मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यहां पर देखिए इसलिए बताना चाह रहा हूं, आज की डेट है 6 नवंबर 2020। अभी आपको ध्यान होगा, मुझे ध्यान है 26 या 25 को हमने लास्ट प्रोग्राम किया था सितंबर में प्रोग्राम किया था ड्रिप कैपिटल के साथ।
वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो भी पार्टिसिपेंट्स अगर मेरे साथ उनमें से कोई जुड़ा हो, कि अगर आपका कोई भी आईटीसी, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। यस, अगर आपका कोई भी आईटीसी जो फाइनेंशियल ईयर 1920 का है और वो आपका 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो आप उसको सितंबर 2020 के जीएसटीआर 3B की जो ड्यू डेट है उसके बाद क्लेम नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या हुआ, और जो ये आपका रेस्ट्रिक्शन लगाई है रिफंड में 2A की, इसका क्या मीनिंग है, मैं यहां पर ये बताना चाहता हूं। मान लीजिए आपने अक्टूबर में कोई गुड्स परचेज की, इनपुट सर्विस ली, कैपिटल गुड्स ली, 1 करोड़ रुपए की परचेज किया आपने, और आपने उस पर 18 लाख टैक्स पे कर दिया। टैक्स पे करने के बाद में आपके पास इनवाइस आ गया, मशीनरी आ गई, इंस्टॉल हो गई, आप एक्सपोर्ट करना आपने स्टार्ट कर दिया। आपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि भाई आपके 2A में आ रहा है या नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि जिससे आपने परचेज किया था उसकी इंटेंशन गलत थी, यह भी तो हो सकता है कि आपके जीएसटी नंबर को उसने गलत पढ़ लिया हो, 0 को उसने ओ पढ़ लिया हो, 1 को उसने आई पढ़ लिया हो, या जेड को उसने 2 पढ़ लिया हो, कुछ भी गलती हो सकती है। अब वो आपके साथ 2A में नहीं आ रहा, आप इस चीज को भूल गए। आपने तो क्या किया, आप टैक्स देते गए, रिफंड आता गया, टैक्स देते गए, रिफंड आता गया। आपने आज मेरा सेमिनार सुना, आपने कहा भाई राजेश सर ने बताया था कि अगर आपके पास में आईटीसी नहीं है तो एलयूटी का ऑप्शन अवेल करके आप टैक्स दे दीजिए। अब आपने क्या किया, सॉरी, एलयूटी का ऑप्शन करके और आप रिफंड क्लेम कर लीजिए। आपने ऐसा ही किया। जब तक आप रिफंड क्लेम कर रहे थे, मार्च वाली एप्लीकेशन पे आप पहुंचे, मार्च 2021 पे आप पहुंचते पहुंचते आप भूल गए, और आपने क्या किया, अक्टूबर में याद आया कि मार्च की रिफंड एप्लीकेशन तुमने फाइल ही नहीं करी। अब आप अक्टूबर में बैठे हैं सब, आप रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो जो वो 1 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में 18 लाख रुपए आपका 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा ना, उसका आप रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका आईटीसी लेने का टाइम पीरियड बीत चुका है। आप उसका आईटीसी ले सकते थे कब तक, सितंबर तक। अब आपने तो ध्यान ही नहीं दिया ना कि 2A में आ रहा है नहीं आ रहा। आपको क्या करना है, आज से ही जिस भी पार्टी से आप परचेज करते हैं, आपको हर महीने की 12 तारीख को एक और नई जीएसटी रिटर्न आ गई है। जीएसटी रिटर्न नहीं है, बेसिकली वो स्टेटमेंट है, जीएसटीआर 2B। आपको ये चेक करना है, जैसे ही 11 तारीख खत्म हो, 12 तारीख आए हर महीने की, जो डेट 12th ऑफ मैं बता रहा हूं, एवरी नेक्स्ट मंथ, आपको ये चेक करना है कि वो आईटीसी रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है तो आप अपनी पार्टी को बोलेंगे, सप्लायर को बोलेंगे अपने को, कि भाई ये 2A में नहीं आ रहा, मेरे में 2B में नहीं आ रहा, इसे ठीक करिए, ताकि वो आपको रिफंड मिल सके। नेक्स्ट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन जीएसटी रेट। और एक पॉइंट इसमें और रह गया, वो शायद मैंने नोट नहीं किया, वो भी ले लेता हूं मैं। रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन जीएसटी रेट। गवर्नमेंट ने क्या किया, अब देखिए, अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो इनवर्ड सप्लाई पर जीएसटी का रेट है, आप आइटम जो परचेज करते हैं वो करते हैं 18% का या 28% का, और आपकी जो आउटपुट सप्लाई है वहां पर जीएसटी का रेट आपका है, मान लीजिए अगर आपका इनवर्ड का 18 है और आउटपुट पर आपका 12 है, तो ये इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर बन जाता है, जहां आउटपुट पे आपका रेट कम है और इनपुट पे रेट आपका ज्यादा है। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, बकायदा इसके लिए एक अलग प्रोविजन बना रखा है, सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 के अंदर सीजीएसटी एक्ट में। वहां पर बोला हुआ है उन्होंने क्लॉज सेकंड में, where the credit has accumulated on account of rate of tax on inputs being higher than the rate of tax on output supply, then taxpayer can claim refund of GST। अब चेंज क्या आया, वहां पर तो सिर्फ इतना लिखा है, जहां पर आउटपुट सप्लाई पे टैक्स रेट कम है और इनपुट सप्लाई पर टैक्स रेट ज्यादा है। अब गवर्नमेंट ने जो ये नया सर्कुलर निकाला ना, सर्कुलर नंबर 135, इसमें क्या नई चीज जोड़ दी, ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट ये कहती है, मान लीजिए
आप क्या करते हैं, आप एक एक्स आइटम परचेज करते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपने क्या किया, एक एक्स आइटम आपने परचेज किया और उस एक्स आइटम पर आपका जो रेट है ना, वो रेट आपका परचेज के टाइम पे 18% है। परंतु जब आप उस आइटम को सेल करने लगे तो गवर्नमेंट ने उस आइटम पर रेट कर दिया 12%। जब आपने परचेज किया, मान लेते हैं जनवरी में, कोविड से पहले मान लीजिए आपने परचेज किया, आपका रेट था 18। अब आज की डेट में नवंबर में आप दिवाली पे उसको सेल करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने लोगों को बेनिफिट देने के लिए उसका रेट कर दिया मान लीजिए 12। अब ये फिट केस है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए। क्यों? क्योंकि आपका आउटपुट तो 12 है और इनपुट था 18। परंतु गवर्नमेंट ने जो नया सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 135, यहां पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी। अगर आप किसी आइटम में ट्रेडिंग करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात का, अगर आप किसी आइटम में ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के केस में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का ये केस अप्लाई नहीं होगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मींस आप प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहीं पर ही आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का केस एप्लीकेबल होगा। अगर आप प्योरली ट्रेडर हैं, आप एक्स आइटम ही परचेज करते हैं, एक्स आइटम ही आप सेल करते हैं, तो आपको रिफंड क्लेम नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूं कि आप क्या करते हैं, रेलवे के पार्ट्स बनाते हैं। आप क्या करते हैं, रेलवे के पार्ट्स बनाते हैं। उस केस में आप जो आइटम परचेज करते हैं ना, वो तो आपका आता है 18 पर, रेलवे को सप्लाई होती है 5% पर। अगर आप इस केस में केवल ट्रेडिंग करेंगे, अगर आप इस केस में केवल ट्रेडिंग करेंगे तो आपको रिफंड अप्लाई नहीं होगा। यदि आप खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको यहां पर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है, बाकायदा नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि रेलवे के केस में आपको रिफंड क्लेम नहीं होगा। परंतु यहां पर कुछ टैक्स पेयर क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि भाई रिफंड क्लेम नहीं होगा तो क्या वो जो आईटीसी है मेरा कॉस्ट बन जाएगा। एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए के रॉ मटेरियल परचेज किया, 18,000 रुपए आपने टैक्स दिया, आपने उस 1 लाख रुपए से अपनी लेबर लगा के आइटम बनाए और 2 लाख रुपए के पार्ट्स बन गए। अब जो 2 लाख रुपए के आपके वो पार्ट्स बन गए, रेलवे को आपने सप्लाई दिया, रेलवे पे रेट है 5%, तो 2 lakhs पर जो 5% एप्लीकेबल होगा दैट इज 10,000, बट आईटीसी ऑन योर इनवर्ड सप्लाई इज 18,000। इन दिस केस यू हैव ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹8,000। अब इस केस में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया हुआ है, भाई अगर आप रेलवे को सप्लाई करते हैं तो आपको रिफंड क्लेम नहीं होगा। अब भाई ये 8,000 रुपए का रिफंड क्लेम नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, परंतु यहां पर एक दूसरी चीज है, आपको रिफंड तो क्लेम नहीं होगा, बट आप इस आईटीसी को जो है आपका 8,000 का बचा हुआ है, अगर आप किसी और प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं तो आप इसे वहां पर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप कोई और भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसी फैक्ट्री में वहीं पर बनता है, या ट्रेडिंग भी मान लीजिए आप करते हैं, तो जो आपका वो आईटीसी बच गया ना 8,000 का, रिफंड तो नहीं मिलेगा, बट आप उसे दूसरे वाले प्रोडक्ट का टैक्स पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो रिफंड गवर्नमेंट ने आपके लिए बैन कर रखा था वो वहां पर आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन रिफंड मिलने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके बैंक में क्रेडिट लेजर में जाएगा, मींस आप उसे यूज कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि मुझे लगता है सारे एक्सपोर्टर को इंपैक्ट पड़ेगा, जरा ध्यान से सुनना, 5 मिनट लगेंगे मेरे को इसको समझाने में। देखिए एक नया गवर्नमेंट ने ना रूल तो पहले ही था, जो मैंने सेकंड पॉइंट में बताया आपको, अमेंडमेंट इन रूल 89 सब रूल 4 क्लॉज सी, इसमें गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया है। और अब वो अमेंडमेंट क्या है, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप मान लीजिए किसी आइटम का एक्सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट कहती है आप किसी आइटम का एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने एक्सपोर्ट की वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ सब, एक्सपोर्ट की वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसका क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट ये कहती है आप एक्सपोर्ट करते हैं और हम आपको, मींस गवर्नमेंट आपको रिफंड देती है, परंतु रिफंड के लिए उन्होंने एक अपर लिमिट लगा दी है। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक एक्स आइटम को एक्सपोर्ट करते हैं और एक्स आइटम की आप डोमेस्टिक सप्लाई भी करते हैं,
जो आपका वो एक्स आइटम है उसका डोमेस्टिक मार्केट में रेट है 100 रुपीज, ध्यान से सुनना, उसका डोमेस्टिक मार्केट में रेट है 100 रुपीज का, और आप एक्सपोर्ट करते हैं उसे 200 रुपीज पर यूनिट। आपने एक यूनिट डोमेस्टिक मार्केट में 100 रुपए की बेची, आपने एक यूनिट इंटरनेशनल मार्केट में 200 रुपए की बेची, मींस आपने 200 रुपए का एक्सपोर्ट किया। अब मान लीजिए आपके पास में 50 रुपए का आईटीसी पड़ा हुआ है, मान लीजिए आपके पास में 50 रुपए का आईटीसी पड़ा हुआ है। जब आप ये 200 रुपए का एक्सपोर्ट करेंगे तो आपने ऑप्शन अवेल किया, क्या ऑप्शन अवेल किया? सब मुझे आईजीएसटी पे नहीं करना, मुझे आईजीएसटी पे नहीं करना, मैं तो क्या करूंगा, जो मेरा एलयूटी है उस ऑप्शन को अवेल करूंगा, और जो 50 रुपए का मेरा आईटीसी पड़ा हुआ है ना, उस पर मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। 100 रुपए मेरी डोमेस्टिक सप्लाई है, 200 रुपए मेरी एक्सपोर्ट सप्लाई है, टोटल सप्लाई हो गई 300। मैं 50 को मल्टीप्लाई करूंगा 200 से और डिवाइडेड करूंगा 300 से। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मुझे 300 रुपए की सेल में से 200 रुपए की जो एक्सपोर्ट हुई है उसके प्रोपोर्शन में 50 रुपए में से रिफंड मिल जाएगा। ये एक कॉमन पार्लियामेंट्स में हम लोग इस प्रोविजन को लेकर चलते हैं। अब अमेंडमेंट क्या आया, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर दिया। गवर्नमेंट कहती है आपने जो 200 रुपए पर यूनिट एक्सपोर्ट किया है ना, इसका रेट आपकी डोमेस्टिक सप्लाई के 1.5 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब क्या मतलब निकला जी साहब इसका? आपने डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया था 100 रुपीज का, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट किया कि जब हम आपको रिफंड देंगे तो रिफंड के लिए जो एक्सपोर्ट टर्नओवर काउंट करेंगे ना, वो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1.5 से। तो आपकी जो एक्सपोर्ट टर्नओवर जो हम 200 रुपए मान के चल रहे थे वो अब कितनी हो गई? वो 150 यानी 150 रुपए हो गई। अब ये जो 150 रुपए हुई है ना, ये सिर्फ रिफंड कैलकुलेशन पर्पज से हुई है। आपकी बुक्स में एक्सपोर्ट 200 ही रहेगी, बट आप जब रिफंड कैलकुलेट करेंगे तो वो 150 रुपए का करेंगे। अब इसका इंपैक्ट देखिए, पहले आपने क्या किया था, 200 के पोर्शन में 50 रुपीज में से आईटीसी का रिफंड लिया था। अब आपको 150 के अकॉर्डिंग रिफंड मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है, पहले हम 200 रुपए लेके चल रहे थे, अब वो 150 रुपए लेके चलेंगे, तो आपका रिफंड भी कम हो जाएगा। यहां पर ये ध्यान रखना। अब क्या हुआ सब, गवर्नमेंट एक तो वैसे ही रिफंड नहीं दे रही, ऊपर से इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। अब एक ये नई समस्या आ गई सब कि मेरी 200 रुपए है, मैं तो गवर्नमेंट को फायदा कर रहा हूं, मैं तो एक्सपोर्ट रियलाइजेशन से अमाउंट ला रहा हूं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा रहा हूं, गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट फॉरेन करेंसी मिल रही है। बट नहीं, कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने देखा है कि बहुत ही हाई रेट पर एक्सपोर्ट हो रहा है, और गवर्नमेंट को शायद, मुझे लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, जिसने भी सोच के प्रोविजन ड्राफ्ट किया उसको ये लगता है कि ये एक्चुअल रियलिस्टिक पिक्चर नहीं है जो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो रिफंड लेने के लिए आपकी एक्सपोर्ट वैल्यू कैलकुलेट होगी उसको डोमेस्टिक प्राइस के 1.5 टाइम्स तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। इससे क्या होगा, आपका रिफंड कम हो जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट और अराइज होता है जी, क्वेश्चन ये अराइज होता है, मान लीजिए आप एक्सपोर्ट तो करते ही नहीं, सॉरी आप डोमेस्टिक सप्लाई तो करते ही नहीं है, आपका जो प्रोडक्ट है वो केवल एक्सपोर्ट होता है, तो डोमेस्टिक वैल्यू कहां से निकालेंगे? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए क्या होगा, आप देखेंगे कि मार्केट के अंदर उसकी डोमेस्टिक प्राइस कितनी है वो आप निकाल लेंगे। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कोई बनाता ही नहीं है इंडिया में, केवल आप ही बनाते हो, उसका मार्केट डोमेस्टिक प्राइस कैसे निकलेगा? मुझे अभी तक कहीं इस बारे में कुछ पढ़ने को नहीं मिला है, इसलिए मैं उसे नहीं बता पाऊंगा आपको। बट यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब आप अपना रिफंड क्लेम करें, किस केस में? विदाउट पेमेंट ऑफ IGST, in case of export, then you need to check your export value should not be greater than 1.5 times of the domestic value. If it is greater,
then your refund will be restricted up to the 1.5 times of the डोमेस्टिक सेल प्राइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या है इसके पीछे। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती थी वो मैंने कवर अप करने की कोशिश की है, बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी करीब करीब 4:50 का टाइम होने वाला है और कुछ आपकी क्वेरीज हैं, तो क्वेरीज में ले लेता हूं। यहाँ पर मैंने अपना, हाँ, एक और पॉइंट है, रेड फ्लैग्स और इसकी एक्सपोर्टर। लास्ट टाइम भी लिया था, अभी भी ले रहा हूं, और नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें भी लूंगा। ये मैं यहाँ पे क्यों बताना चाह रहा हूं, देखिए, जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है, मैं ये नहीं कहता सारे, उसमें से कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व होते हैं जो अनएथिकल्स है, जो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ है। एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर देने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक आइटम है, आप मार्केट जाते हैं, दिवाली आ रही है, आपने ट्यूबलाइट परचेज की, आपने बल्ब परचेज किया, आपने इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी रिलेटेड आइटम परचेज किया। आप क्या करते हैं, शॉप पे जाते हैं और आप कोई भी वो नहीं लेते। क्या नहीं लेते? आप कोई भी इनवॉइस नहीं लेते उसका। अब भाई जो शॉपकीपर है, जो इलेक्ट्रिकल वाला शॉपकीपर है, वो तो अपने आइटम कहीं ना कहीं से परचेज किए होंगे ना उसने। भाई जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बल्ब निकाल रही हैं, ट्यूबलाइट निकाल रही हैं, दूसरे फिटिंग के आइटम्स हैं, वो तो इनवाइस देती हैं, और वो सारा क्या कर रहा है, वो अपना सेल कर रहा है, और आपने उससे इनवाइस नहीं मांगा। अब कुछ केसेस में क्या देखा गया है कि कुछ रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन क्या करते हैं, रजिस्टर्ड जो टैक्स पेयर है वो क्या करते हैं, सब मटेरियल मुझे पता नहीं उन्होंने कहां से परचेज किया, बट उनके पास में इनवाइस नहीं है। उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, भाई क्योंकि वो सामने वाला बंदा वो तो कैश में सेल कर रहा है, इनवाइस ले लिया उससे विदाउट गुड्स, जो कि अनएथिकल है, बिल्कुल गलत है। अब क्या हुआ, जो वो इलेक्ट्रिकल वाला शॉपकीपर है ना, गवर्नमेंट को उसके बारे में पता लग गया, कि ये कैश सेल करता है और इनवाइस किसी दूसरे को देता है। अब बाई चांस मान लीजिए वो इनवाइस किसी एक्सपोर्टर ने ले लिया। अब एक्सपोर्टर क्यों लेता है भाई, वो तो एक्सपोर्ट जब करेगा तो उसको परचेज भी तो दिखानी होगी। वो क्या करता है, अपनी ट्रांजैक्शन को एडजस्टमेंट करने के लिए इनवाइस में इस तरह से डील करता है अनएथिकल प्रोसेस के अंदर। अब जब वो इलेक्ट्रिकल वाला शॉपकीपर गवर्नमेंट ने रेड की, सर्च की, पकड़ा गया, तो उसने बोला जी मैंने तो फलाने फलाने को ये इनवाइस दिए हैं। अब क्या हुआ, उनमें कुछ रजिस्टर्ड पर्सन के नाम आए, उनमें कुछ एक्सपोर्टर थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सभी एक्सपोर्टर को रिस्की एक्सपोर्टर में डाल दिया, और जब भी डिपार्टमेंट के अंदर उनका अकाउंट ओपन होता है, अकाउंट ओपन कैसे, मान लीजिए आप GSTR 3B हर महीने फाइल करते हैं, GSTR 1 हर महीने आप फाइल करते हैं, तो क्या होता है, आपके सामने चीजें आती हैं, आपको डैशबोर्ड नजर आता है, अपना फोटो भी नजर आता है, आपको GSTR 3B एनुअल रिटर्न, सारी चीजें नजर आती हैं। इसी तरह से जब डिपार्टमेंट का ऑफिसर आपके अकाउंट में लॉगिन करता है ना, तो वहां पर रेड फ्लैग नजर आता है, उसको ये पता लग जाता है कि ये जो एक्सपोर्टर है ना, वो रिस्की एक्सपोर्टर है। अगर वो आपका रिफंड इशू करेगा ना, आपको रिफंड देगा, तो रिफंड के लिए सारी टर्म एंड कंडीशन चेक करेगा, और उसके बाद में पॉसिबल अगर उसके लिए हुआ तो वो क्या करेगा, आपका फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेगा। और आप जिसको आगे सप्लाई कर रहे हैं, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट तो चलो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक भी सप्लाई कर रहे हैं तो आगे भी आपकी वेरिफिकेशन होगी। आपकी जो सिस्टर कंसर्न है, क्योंकि आपका पेन नंबर है, वहां से दूसरी जो और पार्टीज है आपसे रिलेटेड, उनकी वेरिफिकेशन भी होगी। तो रेड फ्लैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको ध्यान रखिए, और ऐसे किसी भी प्रोसेस में प्लीज आप इन्वॉल्व मत होना कि आपका जो मार्किंग है डिपार्टमेंट की नजरों में वो रेड फ्लैग या रिस्की एक्सपोर्टर के रूप में हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ड्रिप कैपिटल एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर पेशेंस हियरिंग। दीज ऑल आर माय क्रेडेंशियल्स, माय मोबाइल नंबर, माय ईमेल एड्रेस, और एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है कंसल्ट वॉइस। अभी हाँ, एक लास्ट में एक छोटी सी और अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं। 10 नवंबर को टैली प्राइम का एक प्रोग्राम है। टैली ERP9 ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है टैली प्राइम के नाम से। जो रजिस्टर्ड पर्सन ऑलरेडी टैली को यूज करते हैं उनके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत सारी नई फीचर्स आई हैं। कंसल्ट वाइस यूट्यूब चैनल पर वो प्रोग्राम होगा। आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा।
Or thank you very much to Drip Capital for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, Mr. Khandelwal. That was an extremely informative and exuberant presentation. Moving forward, uh, a note to the audience again. During the webinar, you can submit your questions in the Q&A section of Zoom. When submitting a question, please be brief and specify the speaker for whom the question is intended. Uh, uh, the viewers watching us on YouTube can post their questions in the comment section. One of the other bigger problems among MSMEs is access to the formal credit system. Drip Capital has been helping Indian exporters resolve this working capital issues for the last 4.5 years and during the coronavirus pandemic. Mr. Sarthak Agarwal has been working with Drip Capital for the last 9 months as the regional sales lead. His work focuses on interacting with MSMEs to solve their working capital problems. Sarthak is a St. Xavier's graduate in statistics and has closely worked with several early stage startups in the past. To talk more about Drip Capital and its offering, I would ask him to address our viewers now. Hello, Sarthak. Yes, hi Vanita, thank you. Hi. Can you make me the host, please? I Give me a moment. Here we go. All right. Thank you so much, Vanita, for the kind introduction. And good evening, everybody. Pleasure to be talking to all of you, all 32 of you, on a Friday evening. And thank you, Rajesh ji, for such a insightful and an informative session on GST. So many things that I did not know in spite of being in this industry for a while. So it was really great to learn so many things from you. I hope I am able to add more value to this session by helping our audience out here understand how they can, source more, access more formal credit. So that is what the topic of my presentation is going to be. I am just going to be sharing my screen now. Just a confirmation, is my screen, can any one of the panelists respond if my screen is visible? Yes, it's visible. Great. All right. So as you all know, the topic of my presentation is factoring, which is also known as bill discounting or invoice factoring. And it was it is a very strong tool of finance apart from what is provided by the banks and NBFCs. And it was always needed, but now in times post COVID, it is needed more than ever. So that's exactly what I'm going to be talking about. And this is keeping the MSME segment, our audience, in mind. So before I dive into what exactly Drift Capital does and how we help MSME segment, I'm going to talk about the contribution the SME exporters we feel face in India, and the problems they face and the contributions they make to the economy. So just a little bit of glimpse on the numbers. Most of you will obviously know this, that 30% of India's GDP comes from the MSME segment. And we have over 65 million of them in India that employ close to 11 crore people today. That's about 10% of our population. And as you can see in this graph, with the increase in exports, the MSME exports have also risen. In fact, in 2017 and 18, when the exports had fallen down, the MSME segment continued to increase their contribution towards the Indian exports. That is the kind of value they hold in today's economy. They had their contribution from 30% has now risen to about 50% of the Indian exports. And the last year we did about 330 billion, of which 160 billion came from the MSME segment. I'm sure the numbers would have been updated by now and would be a lot more now. So, sorry. Sarthak, if you can be a little bit louder, or maybe if you can bring your mic closer to you. Okay. Can you tell me if it's fine now?
Uh, yeah, I think it was a little bit more clear. Okay, great. Yeah, Is it better? perfect. It's All right. perfect. It's perfect. All right. So, in spite of the significant contribution that the SMEs and the MSMEs make to the economy and the exports, banks still favor large businesses more. And as you can see, 83% of the finance from bank goes to the large businesses. Although they contribute 50 to 60% of the exports, but they still have access to 83% of the capital. And this is exactly where the origination of credit gap happens, right? Because as you can see, 40 to 50% of exports come from the MSME segment, but they have access to only 17% of the formal credit. And that's what gives rise to the credit gap that all of us are facing today. And which last when I made this presentation amounted about $15 billion, but this is about a year old, so the amount would definitely be a lot more now. Comparing this with our close competitors, our major competitors in the export, which are China, USA, and Vietnam, the Indian MSME segment has the least amount of access to formal finance. Only 4% of our exporters get access to formal finance. Whereas you can see the numbers across our competition, it's 20, 23, and 37. Not only that, in the emerging economies, the collateral to loan value ratio is far lesser than what it is in India. And just to give an example, earlier pre-COVID times, whenever an exporter asked for a loan from a bank, he basically provided credit. He basically provided collateral, of which he got about 100% of that collateral value was given as the loan as credit. But now, post COVID, that has come down to 70 to 80%. This further increases the collateral to loan value ratio, and it kind of worsens for. I mean, the only person who's hit in this scenario is the exporter. Apart from this, there are other factors. GST rollout, as Mr. Rajesh has explained in detail as to what has happened, what happens with the exporters during the time of GST implementation. Just to throw a little bit of numbers, the majority of the problem comes when you're filing, when you're paying compliance and operating costs, and when you have refund claims. That's exactly why we've had this session today. 23,000 crore is an old number, but that's the amount that I know of last that was stuck with the government. And adding to that, the NPAs since the last 2 years have increased, because of which banks have become a lot more averse to lending, right? About 10,000 crores of loan are stressed assets for banks, due to which their export credit has reduced from 39,000 crores to 22,300 crores. Fortunately, the government of India constantly realizes and acknowledges this gap and launches several schemes and several packages for the MSME segment. So the schemes that all of you must be already aware of, the Mudra loan, the 59-minute loan, the credit guarantee scheme. There are several other schemes that are available that can be leveraged by the MSME segment. However, what we have noticed is this benefits the micro enterprises and not the small and medium enterprises, because the amount that the small and medium enterprises require are far larger than what these schemes can offer. So the credit gap still remains. Now, this is exactly the problem that most of our exporters face with the banks. Uh, the first step whenever for an exporter is always to raise finance from a bank, for which the exporter pledges collateral. Now, as we know that the credit cycle with the buyers is large, and the working capital requirement is a constant requirement. What the exporter does after pledging collateral, when he needs more finance, he goes back to the bank and he asks for more. He asks for an overdraft, or he asks for an extended limit on the existing line. The bank requires more collateral to be able to offer that extended limit, and there is obviously a limitation to which the amount of collateral that the exporter can pledge, right? After giving your land, machinery,
and your other assets. So what the exporter tries to do is approaches another bank and tries to basically get an extended credit or an extended credit line on the collateral that has been pledged with his existing bank, for which there is a requirement of a pari passu charge, right? And if your current bank refuses to give the NOC for that, then your AD bank is not, your new bank is not going to lend you, not going to extend you extend your credit line based on your existing collateral. So what would the exporter do in this case? He would approach the NBFCs. And the NBFCs do provide unsecured lending in some cases. However, their working model, their payment methods are not most of the time suitable to the exporter's requirement, right? And also, mostly banks prefer large enterprises because of the way their financials are structured, right? A lot of our exporters, our MSME segment especially, work pretty much like us, Drip Capital, that work pretty much like startups, right? Where we're in the process of figuring out a lot of things and we're always evolving. So is our financial structure within the export house, right? Which gets filtered out by a lot of banks because it's not up to their standard, right? And this is a major factor, the limiting growth or the not enough growth seen as compared to large businesses is a major factor. Banks do not provide access to finance to the SME exporters. To add to that, we have buyers who are the dominators of the market, of the relationship between the exporter and the buyer. It's always been the buyer's market, right? What we want as an exporter is the buyer to pay us on LC terms or on advance terms. But what the buyer can actually get is an open account or a credit period of 30 to 120 days. And most exporters do have that kind of a credit term with their buyers, right? So exporters do manage to raise like a loan, PCFC loan from the bank, which is for 60 days. However, on that loan that you have raised, now you have to offer another 60 to 90 to 120 days of credit to your buyer. So the entire planning goes for a toss. Something that you had taken a loan for 60 days now has basically extended up to 120 to 150 days. So the manufacturing process is reduced by half, right? The shipment cycle is also reduced because you cannot manufacture so much with limited credit line, right? You need a working capital credit line from somewhere to be able to manufacture more, right? And most of the businesses that we have seen, most of the export houses that we have seen, have businesses peaking in few seasons, right? The peak season business, like you have in the agro commodities or in the apparel business, right? During these peak season, the demand is very high. However, access to credit is limited or constant. So not a lot of orders can be met with that kind of a credit line. So again, the need for an extended credit line or an extra credit line comes over there. As if this was not enough, now we have COVID to add to our misery. So the real question is, in today's times, how many of us are lucky enough to constantly have access to more and more working capital as we need, right? Sure, there are several RBI policies that are there for the exporters, that are there for the business segment, the MSME segment. However, we all know at the end of the day, uh, not a lot of us are being benefited. Simple reason, the repo rates have gone down. Yes, there has been moratorium extended on working capital loans. Yes, but also at the same time, the the export credit extended by banks has reduced, by the units have reduced, right? So there is not a lot of lending that is happening. So the advantage of the repo rate is not being leveraged by a lot of us exporters, right? So this is the major problem. Banks and financial institutes are still risk averse and are not willing to increase their NPAs, or are worried about increasing their NPAs on their books, right? So the RBI policies do not reach all of us. Then there was a fiscal package that was announced for 3.6 lakh crores, right? However, more than that was not liquidity infusion, that was more of a credit guarantee.
And like we've already discussed the amount of MSMEs we have, which is close to 64 lakhs. What does that 3.6 lakh crore amount to? Roughly about $7,500 per MSME, which is not even one third the amount of an average invoice of an exporter. Even if I'm supposed to take $30,000 as the average invoice value, and this number of MSMEs is always going to increase, but the package amount is not going to increase. So it's further going to reduce. So again, bottom line, not everybody can benefit from this package, right? And also, whenever these schemes are launched or these packages are launched, there is they are launched for a limited period of time, right? Due to which there is a lot of bunching of loan that happens, right? About a lot of bunching of loan requests, and not everybody can be catered to. So, with in spite of several solutions being there, what we have realized, it is still not reaching to the 65 lakh MSMEs that we have today. And that is exactly why Drip Capital exists. What MSMEs need today is something, a solution that does not show on their balance sheet, right? Which is pretty much an off balance sheet solution, which is what Drip Capital offers. So, in a nutshell, what does Drip Capital do and what is Drip Capital? Drip Capital is a US based trade financing firm, right? That extends access to formal credit to emerging exporters in emerging economies, small and medium sized exporters in economies like India and Mexico predominantly. Our core USP is we offer collateral free working capital. We do not take as much time as the banks or NBFCs or PSU banks take. Our process, we can offer credit to exporters provided all the documentations are met in less than a week's time. And majority of our process is digital. In fact, 99% I can say. So that is what Drip Capital has to offer. Just to give you a brief overview of the company's creditworthiness, we started in 2016 in United States. It's been over 4 years now. We are basically helping more than 600 plus exporters get access to formal credit in Mexico, India, and UAE. Right, we have grown by 200% year on year, and we're proud to have, in fact, even filled the credit gap by at least 1 billion because we financed over 1 billion of shipments until today. Our founders, Pushkar Mukewar and Neil Kothari, both are Wharton alumni, which is an Ivy League MBA school in US, and both have a very strong backing in finance. Right, as you can see, both come from Oliver Wyman and Goldman Sachs. So both are financially very sound and have founded this company 4 years ago. Our investors, some of our premium investors are Axel and Sequoia. Uh, just to give the listeners a brief idea on who Axel and Sequoia is, most of the biggest companies that we've heard of, Google, Facebook, are funded by Axel and Sequoia. So we've acquired funding from them, right? And also we have several HNIs that help us raise debt. So moving forward to exactly how the invoice factoring works with Drip Capital, right? So for example, you have a buyer in US, okay? You probably would be having your payment terms on open account for, let's say, 30, 60, 90 days. Now, what happens in this scenario is how does Drip help you in this scenario? Usually, you would export the goods to him, and after he receives the goods, he receives the documents, and after 30 to 60 days from the BL date or from the discharge date, he will make you the payment. Right? You're completely at the mercy of your exporter, of your buyer. So, how does Drip come into this picture and help you? Is the moment you have dispatched your goods on day zero, right? You submit your shipping documents, which is the invoice, the BL, your purchase order, and your shipping bill to Drip Capital. Drip Capital assesses these documents, and if everything is fine, we credit 80% of that invoice value immediately to you on day zero itself. So 80% of your invoice value you get on day zero, which you are free to use however you want to manufacture more goods, to pay your employees, to increase your business, however you like, right? And on day 30, assuming your credit period is 30, your buyer pays you. So instead of the buyer paying you, the buyer now pays Drip Capital.
Drip Capital collects that money, deducts its charges, which are as low as 0.7% per month. So if you've taken for 30 days, then it'll be 0.7%, and it will remit the remaining amount to your bank account, right? So this the the finance credited to you as an exporter is given to your AD account, right, in the currency of the invoiced currency. To expand on this process a little more, right, as soon as you are ready with your shipment and you prepare your invoice, you assign that invoice to Drip Capital, which basically means you put in Drip Capital's details and you inform the buyer that the payment is supposed to go to Drip Capital, right? And once your vessel has sailed and you've gotten the shipping documents, uh, predominantly the BL, you submit that, you upload that on Drip Capital's portal. We see the scanned copies, and we remit 80% of the invoice value to your AD account in the invoice currency, which is USD, Euro, or pounds. Now, as explained, the exporter pays us the money, we deduct our charges, and we remit 20% of the amount, the remaining amount, after deduction of our charges, to back to your AD account. Now, on receiving these funds, your AD bank can then close its EBRC with DGFT or on RBI servers, right? We will provide you the necessary details required for your AD bank to close the BRC. So this is how Drip Capital works. Few things to take away from this is Drip Capital provides collateral-free working loan. We give you a credit of up to $2.5 million, which means you can have a drawing power of up to $2.5 million. And our pricing is as low as 0.7% per month, right? And plus, we don't, I mean, we're the only company that provides this much of capital in such a short amount of time, right? Comparing ourselves with the regular lenders, which are banks or NBFCs, banks predominantly focus on companies that have annual sales of greater than $50 million, which is where most of the MSMEs also get filtered out. However, we cater to all business house export houses that have an annual export turnover of more than $300,000. Right. Our onboarding process is obviously, as explained, less than a week's time. Our entire underwriting and risk assessment process is digital, so it can be done within a day or 2 days' time. We are collateral free, and again, our financing is also digital. Also, our evaluation criteria is is a factor of your past, uh, your last 12 months trade history and your buyer's credit, your buyer's reputation, and your future trade projections. Right. So we do not look at a lot of fast financial performance. We look at your trade performance. Right. So just how do you sign up with us? It's a simple process. There's a digital form which can also be shared with you by the end of this session to those of you who are interested. Then automatically, once you give your IEC details, we get into the process of underwriting. And once you're eligible, we can, and your underwriting is approved, we share a set of legal documents with you, which again you can e-sign. There not a lot of documents need to be physically exchanged, right? You can e-sign the documents and you can upload the scanned copies of certain documents, and that's it. You're good to go for financing. So just again to give a brief synopsis of our commercials, as I've explained, your credit limit is up to $2.5 million. We finance only 80% of the invoice value. The interest is anywhere between 5.5% to 8% per annum, which is nothing but 0.7% per month. And we provide credit up to 120 days from BL. And our factoring commission is 0.3% for 30 days or 0.6% for 60 days, and so on and so forth. And our terms of agreement, which is renewable every 12 months. Also, your your credit line is also dynamic, unlike most banks. So if you exhaust your credit line and your payments are in place and everything is going smooth, we can also renew your credit line dynamically. So I'll give you an explanation of exactly how much amount are you going to pay to us when you get your invoices factored through us. So for simple calculation, I've taken an invoice value of $10,000.
Now, what happens is, as per our policy, we will advance 80% of that to you, which means we advance you $8,000. Let's say your duration is 60 days, right? So our interest rate, let's say, is 6%. Like I mentioned, 0.75%, but let's say interest rate is 6%, and a factoring commission, like I mentioned, 0.3% for 30 days, 0.6% for 60 days. So factoring commission is 0.6%, right? So how much is the amount you will pay? Firstly, you will pay the interest, right, which is on the advanced amount. So which will be on $88,000 for 60 days. So that will amount to $80, right? Then is your factoring fees, which is on your net invoice value. Net invoice value is basically your invoice value minus the advance that you have received from your buyer, right? So factoring commission would be 0.6%, which would 0.6% of $10,000, which would amount to $60. That's it. That's your total fees. That's $140. So all in all, that becomes 1.4%. But with higher values of invoice, this 1.4% reduces to probably 1%. So in a nutshell, you can consider 1% of your invoice value is what you're paying to Drip Capital. So that is how our commercial structure works. You will also have a dashboard of your own, which through which you can track the status of each of your invoices that you have financed through us. How many are pending, how many are outstanding, how many have been settled, right? Over and above that, you can track the statuses of your shipments, as we also have an invoice tracking facility. So exactly where uh, is your shipment currently in terms, we will basically be tracking the invoice through which you can know exactly where your shipment is. Now, coming to the most common question that I get during these presentations is, what is the eligibility criteria? So please pay attention over here. There are very few eligibility criteria. Any exporter is supposed to have made at least 6 shipments in the last 6 months. The total turnover in the last 12 months, irrespective of the time before that, the total turnover in the last 12 months is supposed to be $300,000. The buyer countries that you have, at least your major buyer countries, should be in the approved list of countries. Basically, should be in the non-sanctioned list of countries. And the goods that you sell should not be perishable, like fresh fruits or vegetables that have a very limited shelf life. Should not be gems and jewelry, and should not be precious metals or ceramics or granites. That's it. That's our eligibility criteria. If any of you are outside this, if you meet this criteria, you're definitely qualified to get support from us. To give insight again about how Drip Capital is as a company, we're one of the most reputed and recognized and respected fintech companies in India today. We have partnered with FIEO and EEPC. We're backed by Sequoia and Axel, as I've already mentioned. We're members of FCI. We worked with more than 700 or 800 exporters now. And yeah, there's more than 7,500 crores of trade has been financed. And we're working with more than our exporters in India are from more than 60 plus cities. So we cover predominantly all tiers, right? And our buyers are in predominantly more than 50 plus countries. We started with India, and then we've now gone on to about expand to UAE and Mexico. Just to give you a brief idea about the impact that we have on the exporters that we work with, while the Indian exports and the MSME exports continue to increase, as you can see, the CAGR is 2.21% and 6%, which is basically the annual growth rate. Exporters who work with us have recorded a 31% growth rate in their business year on year, at least a 31% growth rate, because of the access to formal credit that they have through Drip Capital, right? We've also done an analysis as to what impact we have on the export ecosystem as a whole. From the 1 billion that we have infused in the export ecosystem, we have been responsible for creating more than 1,000 plus jobs, because we've helped exporters grow their businesses by that much. And indirectly, in the entire export ecosystem, we've probably given rise to more than 1,75,000 jobs, right? Just a few testimonies from our proud customers. As you can see in this,
points to take away is this exporter was with us, started with us in 2017 when his value of shipments was about $900,000, of which we financed $400,000. Same time next year, it rose by 3 times, and with Drip Capital's help, his value of shipments went to $2.6 million, and obviously we still were financing 50% of that. So that is the kind of impact that we're talking about. 3 times the kind of growth exporters have seen in less than 2 years' time. Over here as well is a similar scenario. This was an exporter based out of Chennai. It's a public limited company. So they not only get access to a lot of working capital, but they also kind of recover their lost business, which gets affected in times like these due to COVID, due to price competition, uh, quality competition, plus the textile and apparel business is comparatively very down because of the US buyers shutting down. So in cases like these, we are there to help. Drip Capital has been covered in the news by almost every digital and physical tabloid, right? So these are some of our news coverings. You can actually Google Drip Capital and you will find any of these articles, right? We've been covered by Times of India, Economic Times, Your Story. These are the these are the cities that we're working with that you already know of now. These are some of the countries that our majority of our buyers are in: Europe, Asia, or Australia, Middle East, South America, North America, almost all continents. We started with our first business, our first customer was in FMCG. Now we have expanded to garments, leather goods, fabric, agri commodities, frozen foods, which is a major exporter from India, right? Pharma and chemicals, packaging materials, industrials. These are the growing industries in terms of exports. So we're doing a lot of business with them now. And our offices, like we started in US, and our major office is also in India, in Bombay. Feel free to reach out to us on this number on this website. I will now open the floor to questions. Thank you so much. Thank you, Sarthak, for that. We'll now take some questions from the chat section. I think the first question is from Mr. Khandelwal. Bakul Pharma IGST refund is held up due to error in drawback code. Is there any way to get a IGST refund? Drawback code number is 29338, 2933A and 2933B. Drawback rate is same till IGST is denied. Kindly advise. I have already answered this question to the participants, that they need to contact to the custom officer to this problem. Already answered. Okay, you have answered that. In check. Okay. Thank you, sir. Another question for you is GSTR1 is considered as GST refund application. In this case, do we need to pay under table money to GST officer? Some agent is asking for commission to pay the GST officer. I think this question is on YouTube channel. Yes, sir. There is no requirement to give any money to the any officer or any agent under the table, because as I already told you that GSTR1 is the refund application. As and when you file your GSTR1 and GSTR3B, your refund will be get automatically in your bank account within 3 to 7 days. Then why you want to give any money under the table? I think no need to give any money to anyone other than the chartered accountant for their professional services. Okay. Thank you so much for that. Mr. Chandan is asking you, we are paying GST while purchasing input goods. Can we claim refund by paying IGST while doing export? Our shipping bill itself is considered as refund application. No, I want to just to tell you one thing, that yes, shipping bill maybe it is a refund application, but when you file your GSTR1, but when you file your GSTR1, there is a table in the GSTR1, table number 6A. If you fill your table number 6A with all the details regarding your export invoice, date, amount, shipping bill, then it will become a refund application. And when you file your GSTR3B, it will be completed and you will get your refund.
Only shipping bill is not a refund application. Okay. I hope that answers the question for you, Mr. Chandan. The next question is for Sarthak. Sarthak, Mr. Raghu Kotari is asking, is there any credit procedural concession for MSMEs? I need to know, I need him to elaborate more on this question. Exactly what kind of a concession is he talking about? Subvention or what kind of a concession? I mean, we do not provide any concession to the MSMEs for acquiring credit, but what procedural concession is he talking about? I'm not very sure. Mr. Kothari, I'm sure you can, probably elaborate or maybe reach out to one of our executives and they will help you with the answer I Yeah, think I'll Mr. reach. based on your Kothari, question. I think Mr. Kothari wants that any concession in processing fees or in rate of interest. I think he wants to know. That can be well discussed over a call, Mr. Kothari. Depending on that depends on a lot of factors actually. So we can discuss that based on your LTM volume, your credit capacity, and everything. So that we'll need to take that offline. Okay. And the last question for you, Sarthak, is factoring based on a geographic location? I'm unable to get factoring for my shipments to Sri Lanka. What may be the reason? Well, Sri Lanka is a high risk geography. Plus, also you may be having. I mean, since the shipments go to Sri Lanka, it reaches in no time. So the requirement for factoring, the credit period is very less. So the requirement of factoring may reduce because of that. But no, we do factor shipments to Sri Lanka. Uh, the factors that depend on factoring any invoice are basically the risk that the buyer carries, uh, and the geography. So we do factor shipments to high risk geographies, but it also depends on buyer's credit and the exporter's financials. So we can look into it if you give us details of your buyers and your invoices. Okay. Thank you, Sarthak. Thank you, Mr. Khandelwal. I think, ma'am, Uh, there is another question from the Sales Desai, which I have received. Question is okay. that we are facing issues for every monthly submission for the GST returns. We are getting below message. Invoices have failed validation at GST system and have not transmitted to ICE gate due to negative balance. How do we sort out it? There is it is very important question. Already I have answered it by I want to tell all the participants regarding this question. This is a very important question. This problem may arise if you are putting your figure in GSTR 3B in a wrong table. If you are doing export, then you need to show this export in correct table in GSTR 3B. Suppose you have not filled this export in export table, but you have filled in domestic supply table, then this problem will arise, that because your balance of payment means because you have not paid any tax on your export. Why you have not export? Because in GSTR 3B you need to show this export in export table, but by mistakenly you have shown it in domestic supply. Then system will say because you have not paid the tax on export. Why? Because you have not filled that particular table. So this problem will arise that you have a negative balance, so invoices will not be transmitted to IceGate. If you want to know further, you can contact me. I have already shared my credentials, my mobile number, my email address. Thank you. Thank you, sir. Sarthak, there's another question for you on YouTube. Mr. Madhav is asking you, do I need to consult DRIP regarding reliability of a buyer before any shipment? Y- well, yes and no both. You need to first fill the application form with DRIP, and DRIP basically offers a non-recourse facility, which predominantly means we do raise insurance on the buyers that we finance, whose invoices we finance. So yes, you will need to submit buyer details with us so that we can know what are the kind of limits we can offer on that buyer, insured Oh, or uninsured both. okay, okay.
Okay, thanks, Sarthak, on that. So, folks, that's all the time we have today. Thank you once again, Ms. CA Rajesh Kumar Khandelwal and Sarthak Agarwal for taking the time out for this webinar. And thank you to all our viewers for joining us today. Have a great evening. Goodbye. Thank you. Thank you. Thank you so much, Vanita.